Hi guys, welcome back to the channel, and this is gonna be very important video for you because you all know CV plays an important role while applying for the job, while getting the first internship, while getting the first job, or whatever it is. If you want to switch your job or you are finding the job, so CV is the first thing that recruiters see about yourself. So it is very important to create your CV in such a way that in such an attractive way you can say that recruiters should like pay attention, or recruiter should have an impact of your CV. So in that video, I will be definitely sharing you how to create an effective CV so that you can be selected for a job or for an interview or for an internship, whatever it is. And definitely I'm gonna share you a most important thing. I will be sharing you a template which I got in my Craftshala days. Even if you will see that template, you will that is a similar template when most of the MBAs, like whenever you go to the college or for the post graduation or for MBA, you will be getting the kind of same template in the top B school. So this is the very professional and attractive way of presenting your CV. So I will be giving you that template also. So without wasting too much time, let's go to my screen and see how can we create a very professional and very attractive CV in very easy manner. So yeah, let's go to the computer screen. By the way, I'm having my laptop, and let's switch into the screen. uh, so this is the template I was talking about. This is the, like, I have put here my name. You can just put here your name also. So how will you get this thing? You will just have to go to the description and click on the link, and while you will clicking on the link, you will be like getting this page. You will just have to make a copy of this thing. So after making a copy, you will be able to edit this template. So this is the most professional and very attractive template, what I feel. And the thing is, there are some 2 to 3 points you will have to like be very careful. I will also show my CV key, how should you go ahead with that thing. So the thing is, you will have to like put your name here, and aspiring. Why? Because if you are like fresher, if you are fresher and you don't have any kind of experience in the for the same domain, you can just put aspiring digital marketer or aspiring whatever it is, social media marketer or data analyst, whatever your role is, you can just put here aspiring. If you are a fresher, and if you are having some kind of experience, if you are like feeling like you are a digital marketer, you can just put digital marketer over here. फिर आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर. यू विल बी पुटिंग योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हियर, रोल, पोजीशन, नेम, कंपनी नेम, सिटी. So you will be putting your name, your position here, like you are let's say social media strategist. Not sure about the spelling. Okay. Company name, you can put any company, like I can remember Dentsu. उसके बाद आता है आपका सिटी. लेट्स से यू आर इन working in Pune. If it is a remote work, if it is an online job or whatever it is, if it is a like hybrid, you can put hybrid. If it is a remote, you can put remote. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. उसके बाद you will be very careful while writing these sentences. So you will start this sentence. This is the like description of the job you did with the impact verb. What is impact verb? You will be just getting the impact verb by a Google search. ये सारे impact verb होते हैं. I'm gonna show you my CV की क्या कैसे start करना है. So this is the thing, like successfully, expertise, proficient, strong, and then selected, completed, achieved, awarded, impaneled, motivated. These are the impact verb. So आपको start करना है like I have handled. This is not the like बहुत ही एक जेनेरिक सेंटेंस हो जाएगा कि आई वॉज सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, आई हैव हैंडल सोशल मीडिया अकाउंट फॉर दिस कंपनी. नो, दिस इज नॉट इम्पैनल्ड और स्ट्रेम. लाइक impact verb you will have to use, and impact verb I have given it over here, like executed, motivated. Like if you have done say, like some kind of activities among the people, so you can use motivated. These kind of like these number of people. Numbers is the second important thing. You will be writing like situation and action verb, like I have written it. Successfully managed and optimized CPS, CPV branding campaign. Successfully managing Google Ads and Facebook Ads. Whatever you are doing. So you will be situation and action verb should be there, and result, numbers. Results and numbers are the key points you will be like noting. Like you will have to note. So result and numbers, what is it? You don't have to tell the story. A recruiter is really not interested in your story कि आपने क्या किया, कैसे किया. आपने जो किया उसका रिजल्ट क्या आया. सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट द नंबर्स की बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ नंबर्स आई हैव अचीव्ड. सो इट इज़ बेटर टू यूज नंबर्स, यूज लाइक सिचुएशन, एक्शन वर्ब, इम्पैक्ट वर्ब एंड रिजल्ट. सो यू विल बी जस्ट पुटिंग एवरीथिंग ओवर हियर. अगर आप लाइक फ्रेशर हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू हैव नॉट डन एनी इंटर्नशिप, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस थिंग. यू विल बी डिलीटिंग दिस थिंग और आप अपना CV यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन से. बट यू विल हैव टू डिलीट, इसको ऐसे नहीं छोड़ने का. यू विल हैव टू डिलीट ऑल दिस थिंग.
उसके बाद एजुकेशन में आप यहाँ पर पूरा फुलफिल करो जो भी आप कर रहा हो, जितना भी रहा हो, लाइक इफ यू हैव नॉट डन मास्टर्स यू कैन डिलीट दिस थिंग, ठीक है। तो दिस इज द एडिटेबल टेम्पलेट, यू कैन लाइक क्रिएट अकॉर्डिंगली, बट रिमेंबर फॉर्मेटिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप। लाइक अगर आप कहीं भी फॉर्मेटिंग गड़बड़ करते हैं और वो रिक्रूटर की नज़र में आ जाता है कि बंदे ने अलाइनमेंट जैसे गड़बड़ है, अब ए के नीचे ऐसा अलाइनमेंट चल रहा है, फिर ऐसे तिरछा मिर्छा घुमा दिया, पूरा CV खराब हो गया, तो वो चीज़ नहीं करनी है, स्पेशली फॉर द फ्रेशर। सो यू डोंट हैव टू डू लाइक डोंट डू दिस थिंग्स। तो फॉर्मेटिंग एंड स्पेलिंग्स एरर शुड नॉट बी देयर इन योर CV। बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूरा दिन लेके यू कैन लाइक रिवाइज ऑल द थिंग्स, बट स्पेलिंग एरर्स एंड फॉर्मेटिंग शुड बी प्रॉपर एंड प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स भर देना। करंट एक्सपीरियंस यू कैन ऑल्सो डिलीट दिस थिंग इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर एडिशनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, एडिशनल एक्सपीरियंस it should be in a caps. You will have to be very careful about the formatting. So additional experience you can add here. If there is no experience you can just skip this thing, but I would suggest you to add anything related to your internship, related to your program, training, or whatever job you have done. So it is always better to add any kind of experience in your CV. Then coming to the position of responsibilities, I will just show you my CV, how I represented it. So in a position of responsibility I was camps and collaboration manager at Blood Connect Foundation, which was hybrid. So I have like did it in that way. उसके बाद class representative, if you are class representative, head boy, monitor, whatever position you've handled till now, कोई भी position you can mention. So is anything you think कि yeah it is suitable. If you have like volunteered for any NGO, that is also a position you have handled, that is a responsibility. So whatever responsibility you have handled you can just mention this thing over here. पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लाइक NGO एक्सपीरियंस यू कैन ऐड। उसके बाद क्लास मॉनिटर तो नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हेड बॉय, स्कूल कैप्टन, वॉट एवर इट इज़ यू कैन जस्ट ऐड इट। एंड उसके बाद अदर नॉट अदर इंटरेस्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एडिशनल एक्सपीरियंस, वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशंस, यू हैव डन एनी कोर्स, you have done any, like you participated in any sport, you are champion of carom, you are champion of chess, whatever you are, like you can just mention those things over here, but it should be in a proper way. Like I have mentioned, I have done this certification, I was campus ambassador at Viral Fission also. I participated in a national conclave on strategic intervention on a modern India, VSCMS कानपुर. So you will have to like आप एक बार देख लो, and I would suggest you कि यहाँ पर जो ये ऐसे गैप है ना, don't show the gapping thing. You try to fill this up. Like I have tried to fill this up here, over here. So gap जहाँ पर आ जाता है ना, like this should not be there. Ideally this should be ignored. तो यहाँ पर बहुत फिर फोकस वहीं पे जाता है कि क्या है, लाइक इट रिप्रेजेंट कि आपके पास कुछ है नहीं बताने को, तो आपने यहाँ पर ऐसा छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। लाइक यहाँ पर यू कैन डू बेटर, यहाँ पर इट इज़ गुड, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत गैप है, बहुत खाली करके मत वो करना। यू कैन ऐड एनी थिंग, लाइक इफ़ यू थिंक कि दिस शुड बी एडेड, आई हैव डन दिस थिंग, यू फील लाइक मेरे को ऐड करना चाहिए, आई वॉज लाइक हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन और वट एवर इट इज़, यू कैन जस्ट ऐड इट। उसके बाद अदर इंटरेस्ट में यू कैन राइट योर हॉबी, यू कैन like use the sentences also, but I didn't use because it was already filled. तो एक पेज या ये दूसरे पेज में चला जाता है if I add the sentences in the hobbies thing, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। You can create your CV in 1 or 2 page also, 2 page तक तो ठीक है, but it should not be more than 2 pages. तो 1 page में try to conclude everything in a 1 page only, but अगर नहीं होता है तो you can go for the 2 pages. So these were some important things I had to tell you. You have already seen this CV. You can add contact information, like you can edit it अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहते हो, you can just edit it. And I think nothing left. Yeah, so you can just download this template via my description link. And yeah, so that's the thing. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, if this is like informative for you, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो you can just like, share and subscribe this video. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।